dear students and learners, a warm welcome to all of you to my lecture series on this YouTube channel English Mania. Feed the mind, feel the English. If you haven't subscribed the channel, please subscribe it now. So today's video lecture is about the brainstorming activity from the poem 2.1, The Song of the Open Road. So let's see the first question. Question number A1, activity number 1 is pick out the lines showing that the poet is prepared to enjoy every moment of his journey. This is the first question. आपको ऐसी लाइंस बताना है जिस पोयम में से जो कि आपको एग्ज़ाम में भी दी जाएंगी, जिसमें पोएट बोलता है कि वो हर मोमेंट अपनी लाइफ का, अपनी जर्नी का एंजॉय करना चाहेंगे. तो ऐसी लाइंस आपको लिखनी है. अगर ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आता है एग्जामिनेशन में, तो आपको कोई 4 लाइंस उसमें से लिखनी है. तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. So I am showing you 5 lines from the poem that shows the poet wants to enjoy every moment of his journey. First one is healthy, free, the world before me. Second is afoot and light-hearted, I take to the open road, the long brown path before me, leading wherever I choose. Fourth line is strong and content, I travel the ओपन रोड. एंड लास्ट वन इज़ द अर्थ दैट इज़ सफिशिएंट. सो ये 5 लाइंस है जो कि पोएम्स में से ही आपको लिखनी है इसके आंसर के लिए. सेकेंड क्वेश्चन इज बाय ओल्ड डेलिशियस बर्डन्स द पोएट मीन्स. ओल्ड डेलिशियस बर्डन से पोएट का क्या मतलब है. 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं. द लगेज, द फूड he carries, the stress he bears during the travels, and last one is sweet memories of the past. So the last answer, option D, is the correct one. Old delicious burdens means sweet memories of the past. Third question is the poet is a person who is free from all inhibitions. Discuss how the concept of freedom is expressed in the poem. जो कि इस पोएम की थीम भी है. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज फ्रीडम. इसको आपको एक्सप्रेस करना है, इसको आपको एलैबोरेट करना है. नाउ लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो दिस इज द आंसर. द आंसर इज द थीम ऑफ दिस पोएम इज फ्रीडम. द स्पीकर or the poet describes himself as being healthy and free. He realizes he is the only person who is in complete control of his life. His freedom enabled him to choose his own destiny. He doesn't need to pray for good fortune. He attests that he himself is his own good fortune. There is nothing that he is lacking because he is free to get all. He will reach his destination on his own, and the earth will provide him with anything extra that is necessary. The poem teaches the reader to be true to oneself and live a life of freedom like birds. The greatest joy in life is to live independently and freely. The poem begins in a very hopeful and idealistic tone. The narrator is setting off on his journey with free mind without a care in the world. So ये जो concept है freedom का, वो इस पोएम में एक्सप्रेस किया गया है वेरी ब्यूटीफुली. Now let's see the second activity A2. Number 1 is following are the activities of the poet related to his journey on the road. नीचे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जो कि रिलेटेड है पोएट की जर्नी से जो उसने रोड पे की. डिवाइड देम इनटू 2 पार्ट्स एज एक्टिविटीज़ द पोएट विल प्रैक्टिस. ऐसी एक्टिविटीज़ जो पोएट प्रैक्टिस करेगा एंड द एक्टिविटीज़ ही विल नॉट प्रैक्टिस. तो हम इसको ट्रू और फॉल्स में लेते हैं. ऐसी एक्टिविटीज़ जो पोएट इन फ्यूचर प्रैक्टिस करेगा और ऐसी एक्टिविटीज़ जो पोएट प्रैक्टिस नहीं करेगा. तो फर्स्ट एक्टिविटी इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द रोड दो ही डज नॉट नो वेयर इट रीचेस. तो ये एक्टिविटी डेफिनेटली पोएम अब इन फ्यूचर करेगा, इसलिए उसको ट्रू दिया है. कंप्लेनिंग अबाउट द डिस्कम्फर्ट्स ड्यूरिंग द जर्नी, इसलिए इसको फॉल्स दिया है. पोस्टपोनिंग द जर्नी, अगेन इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट, सो ये फॉल्स है. फोर्थ वन इज प्रेइंग फॉर गुड फॉर्चून, अगेन ये फॉल्स है. ई वाला ऑप्शन देखिए कैरिंग द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ द गुड पीपल, तो ये ट्रू है.
क्रिएटिंग कॉन्टैक्ट्स विथ फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, ऑब्वियसली ये फॉल्स है. स्ट्राइविंग टू अचीव हाई एंड ब्राइट सक्सेस, ये भी फॉल्स है. और लास्ट वन इज ट्रू, दैट इज रिफ्लेक्टिंग एंड डेवलपिंग हिज ओन सेल्फ. Now let's see another question. Write down the traits the poet exhibit through following lines. One is done for you. एक आपको दिया हुआ है आंसर. ऐसे पोएट के ट्रेट्स हैं जो उसने लाइन्स आपको दी हुई है. पोएट ने कौन सा ट्रेट उससे हासिल किया है वो आपको बताना है. जिसके पहले देखिए, henceforth I ask for no good fortune, I myself am good fortune. तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला ट्रेट उसने इस लाइन से बताया है. नेक्स्ट इज henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. तो इससे जो ट्रेट हासिल हुआ है वो है सेल्फ सफिशिएंट. थर्ड वन इज आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर, तो ये है नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स. Fourth one is I swear it is impossible for me to get rid of them. So the trait is responsible and aware. Last line is I am filled with them, I will fill them in return. ये है gratitude. जो trait आया है वो है gratitude. Next question is healthy free the world before me. ये line है poem की. Express your views regarding the above line. तो इट्स अ पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन. तो इसमें यू कैन टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइक फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अनलिमिटेड फ्रीडम टू इम्प्रूव योर सेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज A3. द पोएट हैज़ यूज्ड मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स सच एज हेल्दी इन दिस पोएम. मेक अ लिस्ट एंड क्लासीफाई देम एज. जैसे कि देखिए जो पोएट ने यूज़ किया है हेल्दी वर्ड, ठीक है. तो इस टाइप के और भी वर्ड्स जो है पोएट ने यूज़ किए हैं. जैसे कि फॉर द वर्ल्ड, वर्ल्ड के लिए उसने यूज़ किया है हेल्दी एंड फ्री वर्ड को. फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए उसने जो यूज़ किया है वर्ड्स वो है गुड फॉर्च्यून, लाइट हार्टेड, स्ट्रॉन्ग, कॉन्टेंट, नॉट विम्परिंग. एंड लास्ट वन इज़ फॉर द रोड, रोड के लिए उसने ओपन रोड कहा है, ऑब्वियसली लॉन्ग बोला है, और ब्राउन रोड भी कहा है. A4 इज रीड द एक्सप्रेशन ओल्ड डेलिशियस बर्डन, जो कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखे थे कि ओल्ड डेलिशियस बर्डन का मतलब होता है पास्ट मेमोरीज. लेकिन यहाँ पे बोला गया है अ बर्डन कैन नॉट बी डिलीशियस. एक जो बर्डन है, जो बोझ है, वो डिलीशियस नहीं हो सकता. The poet has used this combination of words to express that he has many sweet memories of the people and places which he would like to remember forever. The poet has used seemingly contradictory expressions to convey the meaning that his heart is full of sweet memories of good and kind people. Though he wants to be free from any type of attachment, he wants to cherish these sweet memories in his heart. यहाँ पे आपको बताना है the expression contains opposite idea that makes it seem absurd or unlikely. Although it may be true, this is called paradox. ये जो यहाँ पे है लाइन ओल्ड डेलिशियस बर्डन वाली, वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो है पैराडॉक्स. तो एग्ज़ाम में ऐसा आ सकता है कि ये लाइन आपको दी जाएगी और बोला जाएगा कि पिक आउट द व्हाट इज़ द नेम द फिगर ऑफ स्पीच और पिक आउट द एग्जांपल ऑफ पैराडॉक्स. ऐसे करके आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोड इन द पोएम डज नॉट मीन ओनली द रोड टू ट्रैवल. द पोएट वांट्स टू सजेस्ट द रोड ऑफ लाइफ. एक्सप्लेन द मेटाफर विद द हेल्प ऑफ द पोएम. जो रोड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है वो ट्रैवल के लिए नहीं बात हो रही है, बल्कि रोड ऑफ लाइफ है ये. ओके तो इसमें जो मेटाफर यूज़ किया गया है उसको आपको इलेबरेट करना है, एक्सप्लेन करना है. फ्री वर्स, देखिए फ्री वर्स क्या होता है. फ्री वर्स इज अ पोइट्री दैट डज नॉट राइम और हैव अ रेगुलर रिदम. द फीचर ऑफ फ्री वर्स आर, फ्री वर्स को ब्लैंक वर्स भी कहा जाता है. फ्री वर्स एक ऐसी पोएम होती है जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती. इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस दैट इज फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ रेगुलर मीटर और रिदम, does not rhyme with fixed forms, and still it provides an artistic expression. In this way, the poet can give his own shape to a poem as he desires and can use various poetic devices to create the effect he considers suitable for the piece. So as free verse gives greater freedom for choosing words and conveying their meaning to readers, it is free from artificiality of a typical poetic expression. This technique is commonly used in modern poetry. तो फ्री वर्स के बारे में दिया हुआ है कि कोई राइम नहीं होती है
आप इसे याद कर रख सकते हो पोएटिक अप्रिसिएशन के लिए। अगर ये पोएम आती है अप्रिसिएशन के लिए तो आप वो भी याद रख सकते हो। देयर आर सर्टन वर्ड्स दैट आर रिपीटेड इन द पोएम, फॉर एग्जाम्पल नो मोर लाइन नंबर 7 में यूज हुआ है। फाइंड आउट अदर सिमिलर एक्सप्रेशन, explain the effect they have created in the poem. The use of personal pronoun I is evident and prominent in this poem. Give reason. I जो है वो pronoun personal pronoun का use किया गया है, तो उसका evident और prominent जो है जो significance है वो आपको बताना है। With the help of the following points, write a poetic appreciation of the poem. देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि अप्रिसिएशन लिखना है, इट्स अ कंपलसरी क्वेश्चन एंड पोएटिक अप्रिसिएशन विल बी आस्क्ड इन ऑन क्वेश्चन नंबर 3B ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 3 के बी में आपको पोएटिक अप्रिसिएशन का क्वेश्चन आता है एंड दैट विल बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्क के लिए। तो पोएम तो कोई भी आ सकती है, जो 6 पोएम्स आपको अभी 2021 के लिए प्रिस्क्राइब्ड है उसमें से। तो अगर हम बात करें पोएटिक अप्रिसिएशन की, वैसे तो इसका अलग से एक वीडियो लेक्चर आपको बन के मिलेगा, लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है तो देख लेते हैं। थीम है इसकी फ्रीडम, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, फ्री विल टू मेक योर ओन डेस्टिनी। पोएटिक स्टाइल है फ्री वर्स, जिसके वी हैव जस्ट सीन। अनइवन लेंथ ऑफ लाइन्स है। लैंग्वेज और पोएटिक डिवाइस की बात करें तो सिंपल लैंग्वेज यूज़ की गई है। मेटाफर, पैराडॉक्स और रिपीटेशन जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है, इंडिकेटिंग द स्पीकर परहैप्स द पोएट हिमसेल्फ अंडरस्टूड हिमसेल्फ वेरी वेल। मैसेज की बात करें, मैसेज, वैल्यूज़ एंड मॉरल्स जो पोएम देती है वो है, Destiny lies in your own hands. Life offers many opportunities and everyone is free to pursue them by overcoming their inhibitions, doubts and fears. Should be self-confidence and self-sufficient, encourages readers to be true to themselves and follow dream. Okay, लास्ट में आपका ओपिनियन भी बताना है जो कि इसमें मैसेज में ही आ गया है। Write 4 to 6 lines of free verse on the topic the road that leads to my college. आपको 6 लाइन्स लिखनी है, 4 से 6 लाइन, और पोएम का शीर्षक है द रोड दैट लीड्स टू माई कॉलेज। इसके ऊपर आपको लाइन्स बनानी, छोटी सी पोएम फ्री वर्स पे बनानी है। राइट अ ब्लॉग ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, आपको ब्लॉग राइटिंग दिया हुआ है राइटिंग स्किल में, मैन इज फ्री बाय बर्थ करके। इस टॉपिक पे आपको ब्लॉग राइटिंग लिखना है। एक्सपांड द आइडियाज़ में आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ऑल रोड्स लीड्स टू रोम, और सेकेंड है अ मैन विदाउट लिबर्टी इज अ बॉडी विदाउट अ सोल। So A5 question we have seen poetic appreciation, and the last question is take help from the sources available on the internet. You can search on Google and make a list of proverbs and quotations about the road. So I have written here. First one is, it is the rough road that leads to great heights, and second one is, beautiful paths can't be discovered without getting lost. रीड द पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही फेमस पोएट है, उनकी एक पोएम है द रोड नॉट टेकन। तो आपको एक्टिविटी में दिया हुआ है कि आपको उसको पढ़ना है, पढ़ के देखिए, बहुत अच्छी पोएम है। So thank you so much for watching this video. Hope you have got whatever I have taught you in this short video. Keep learning. Thank you.